मेरे भाई सर, ने सब चल रहा है। इंटरव्यू फाइन। हाँ सर। हाँ, दे दिया सर वो, जाने वाला है अभी। तो कुछ आया भी नहीं। तो उन्होंने बोला है कि मैं जा रहा हूँ, तो उनकी एक बार मेल कर दो, फिर डिस्कस करता रहता है। अच्छा अच्छा। हाय स्टेशन। So I will show you how to, what are the railway GAD. I think you are dealing with the ROBs, your pre-planning, ना? हेलो। हाँ सर, हाँ हाँ। और भी कई तो चल मैं रहा है कुछ। हाँ दिखाता हूँ तो एक दो ड्राइंग थोड़ा से क्लियर होगा। चाहिए एक मिनट स्क्रीन शेयर कर। तो क्योंकि अब हम चालू ही अपने स्टील ब्रिजेस कर रहे हैं, तो स्टील ब्रिजेस ज्यादातर आते ही रेलवे में है अनटिल अनलेस कोई स्पेसिफिक, अगर किसी को हाईवे में जल्दी का कट करना है तो तब जाके आते हैं, या फिर क्लाइंट होता है। तो जनरली जो सबसे पहले इन्वॉल्व होता है, एक रेलवे का जीएडी बनता है इस टाइप से। ये होता है एक रेलवे का जीएडी। और इसके जो ये वाला होता है, ये होता है पीडब्ल्यूडी का जीएडी। मतलब इसको हाँ। बोलते हैं अप्रोच पोर्शन। ये यस। होता है अप्रोच का। तो हम्म। एक अप्रोच का बनता है, एक रेलवे बन रहा है, तो ये है रेलवे का। इसमें सिर्फ रेलवे का पोर्शन हाईलाइट होता हाँ। है। इससे जो दूसरा होता है वो मैं देख रहा था, अप्रोच का मिला नहीं, देखूं वो भी दिखा दे रहा हूँ। अप्रोच का पोर्शन नहीं है इसमें। एक मिनट, इसमें होगा। फिर अप्रोच का मिल जाएगा तो समझ में आ जाएगा। रेलवे, रेलवे, हाँ ये रहा अप्रोच का। जैसे अब इसमें होगा अप्रोच का। ये तो डिटेल है। इसमें सिर्फ वो दिया हुआ अप्रोच का, जीएडी नहीं है। जीएडी से हाँ, जीएडी अप्रोच है ना। हाँ। ये है अप्रोच का। तो हमेशा सबको, इसलिए सबको ये दिखा रहा हूँ, तो ये होता है फुल जीएडी। इसको हाँ। बोलते हैं फुल। जनरली ये डीपीआर के टाइम पे बन जाता है, फिर दोबारा बनाना पड़ता है जब डिटेल डिजाइन होता है। तो एक तो ये बनता है डीपीआर के टाइम कि हमारा लोड का अलाइनमेंट कैसा रहेगा, और एक रफ मार्किंग ये होती है कि इनिशियली कुछ ना कुछ हमें लेके चलना पड़ता है कि कितने डिस्टेंस पे हमारे पियर रहेंगे। अब इसमें देखोगे ये 20-20 पे लेके चले तो 20 मीटर का स्पैन आसान है इनके लिए। लेकिन हाँ। जैसे जैसे ये रेलवे के करीब आ गया, अब रेलवे लाइन मेरी यहाँ है, तो यहाँ स्पैन चेंज हो गया, जैसे 25 हो गया, 23 हो गया। अब रेलवे का पोर्शन जो होता है वो देखना होता है। रेलवे जो पोर्शन मेंशन करा हुआ, इन्होंने मेंशन करा हुआ, इसमें नंबरिंग चेंज हो जाती है। आरपी वन मतलब रेलवे पोर्शन 1 2 3 ऐसे करके चेंज करके ये जा रहा है आरपी 6 तक। लेकिन उससे पहले क्या है, ये हमारा पीडब्ल्यूडी में आता है, या फिर जो भी स्टेट अथॉरिटी होती है उसके अंडर आता है। कोई जरूरी नहीं, अगर महाराष्ट्र में तो एमसीजीएम के अंदर भी आ सकता है, या एमएमआरडीए के अंदर भी आ सकता है, किसी के अंदर भी आ जाता है। ये पीडब्ल्यूडी के अंदर जनरली आता है, क्योंकि स्टेट के ब्रिजेस या एनएचआई के अंडर आएगा। लेकिन ये अलग होता है, ये स्ट्रक्चर अलग होता है। अब डिपेंड करता है, जब हम ब्रिज की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हमारी प्लानिंग क्या होती है ब्रिज की, कि हमें रेलवे के ऊपर से गुजारना होता है ब्रिज। लेकिन इससे पीछे का जो होता है उससे हमें लेना देना बात जब होता है कि पहले तो यहाँ की सॉइल कितनी है और यहाँ पे हमें कितना क्लियरेंस चाहिए। जनरली रेलवे से जो क्लियरेंस चाहिए होता है, रेलवे उससे ऊपर चाहिए होता है 6.5 मीटर मिनिमम। अगर वो मिनिमम नहीं मिलेगा तो ब्रिज हमारा बन ही नहीं सकता, वरना हमारी जो केबल जाती है रेलवे के लिए वही इलेक्ट्रोफाइड कर देंगी हमारे ब्रिज को। तो 6.5 मिनिमम है जो टच ना हो। तो जनरली हम 7 या 8 के लेके चलते हैं। अब रेलवे पे क्या होता है, रेलवे का पूरा स्पैन हमेशा स्ट्रेट होता है। इसमें कोई भी आप अपना ग्रेडियंट नहीं दे सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है प्लानिंग में, अगर कोई रेलवे ब्रिज कर रहे हो या स्टील ब्रिज, तो जनरली इनिशियली ये जो हमारा रेलवे का पोर्शन है ये पूरा स्ट्रेट रहेगा, हमारी जमीन कैसी भी हो। तो अगर हमारे पे क्लियर हाइट नहीं मिल रही तो हम क्लियर हाइट जब तक नहीं मिलेगी उसके बाद पूरा स्ट्रेट बनाएंगे पोर्शन। इसमें कोई ग्रेडियंट नहीं देंगे। अब यहाँ पे रेलवे बाउंड्री होगी मेरी, और एक रेलवे बाउंड्री यहाँ पे होगी।
RP6 पे, इन दोनों के बाद से मेरा ग्रेजुअली डिक्रीज चालू हो जाएगा। ये टोटली डिपेंड करता है हाईवे के ऊपर कि हाईवे कौन सी स्पीड में आपकी व्हीकल को उतारना चाह रहा है। अगर वो हाईयर स्पीड में लेना चाह रहा है तो ये स्लोप काफी वो देगा, ज्यादा देगा। अगर वो लोअर स्पीड में तो वो यहाँ से भी चालू कर सकता है ब्रिज डायरेक्टली। तो ये टोटली की टोटली डिपेंड करता है स्ट्रेट पोर्शन का, जब ब्रिज हमारा ग्रेडियंट स्लोप में या तो उठना चालू हो या यहाँ पे गिरना चालू हो, वो पूरा हाईवे डिसाइड करता है। और उस पर भी डिपेंड करता है कि लोकली टोपो में कैसा रास्ता अवेलेबल है, कि हमारी कोई शॉप तो नहीं आ रही या किसी का लैंड तो हम ऑक्यूपाई नहीं कर रहे या कुछ और तो नहीं आ रहा। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि रेलवे ब्रिजेस ऐसे भी होते हैं कि आपके अबटमेंट यहीं डायरेक्ट बनते हैं और यहीं से ही ग्रेजुअली अपना ये सॉइल लगा के यहीं से ही प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, अप्रोच पोर्शन बना लेते हैं। ज्यादातर इसको बोलते हैं अप्रोच का अपना, कि रेलवे तक यहाँ तक पहुंचेंगे, ये रेलवे ब्रिज चालू हुआ फिर रेलवे के यहाँ तक पहुंचेंगे। और रेलवे ब्रिज में फिर हमें वो भी देना पड़ता है कि वॉकवे, वॉकवे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि विदाउट वॉकवे, क्योंकि अगर किसी को पैदल क्रॉस करना है तो वो अलाउड नहीं होता, रेलवे बाउंड्री फिक्स होती है, वो कर लेते हैं क्रॉस बाउंड्री में सुराग उराग करके, लेकिन हमेशा वॉकवे दिया जाता है। जब आपका ये चीज फिक्स हो जाती है फिर हमारे पास रेलवे की एक और ड्राइंग होती है। मतलब आप एक बार स्पैन फिक्स कर लो 36, या ये जैसे 37.2 लिखा हुआ है इसका मीटर, इसका मतलब है 36 का सेंटर होगा, और 600 वो हो जाती है उसकी बेयरिंग, अपने बेयरिंग सेंटर से एक्सपेंशन जॉइंट तक। फिर उसके बाद ये हमारी एक ये हमारा बन जाता है एक रेलवे का जीडी, सिर्फ रेलवे आएगी। रेलवे मतलब इसमें सिर्फ ये मिडिल का पोर्शन आएगा, और ये बाकी का जीएडी को कुछ हाईलाइट नहीं कराया जाता, उसको बस ऐसे नीचे साइड में दिखा देते हैं ऐसे करके, बस और कुछ नहीं होता। अब जो रेलवे का जीएडी बनता है इसमें बहुत प्रॉपर चीजें डिफाइन होती है। इसमें क्या होगा, एक चीज लिखी हुई होगी ऐसे करके कि यहाँ से यहाँ तक का स्पैन तो समझ में आ रहा है। अगर ये स्क्यू है या हमारा स्ट्रेट है ये डिपेंड करेगा। ये हल्का सा स्क्यू है तो जैसे 7 से 0 मेरी स्ट्रेट आ रही है और ये स्क्यू आ रही है, तो हमेशा स्क्यू लेंथ देखी जाती है। शायद 4-5 डिग्री स्क्यू है यहाँ पे, अगर मैं देखूं दिया हुआ है स्क्यू, या तो स्क्यू है। आप यहाँ पे मेंशन करना होता है स्क्यू एंगल, या फिर हम मेंशन करते हैं कि स्क्यू एंगल की टेबल होती है। इसमें देख नहीं रहा, टेबल देखूं है क्या स्क्यू की, हाँ यहाँ है ना, 5 डिग्री स्क्यू है। तो 5 डिग्री स्क्यू कोई इतना ज्यादा नहीं होता, तभी बहुत कम डिफरेंस आ रहा है। तो ये सब चीजें प्लान में दिखानी पड़ती हैं। अब फिर आती है बात इसकी, यहाँ पे स्टेयर केस भी आपको देनी पड़ती है, ये भी हमारे स्कोप में ही होता है डिजाइन में, ये भी स्टेयर केस भी हमारे डिजाइन में ही होती है। तो अब बात आती है कि ब्रिज जो बना रहे हैं हम कितनी लेन के लिए बना रहे हैं, तो वो भी जनरली ट्रैफिक सर्वे होता है उसका, उसी हिसाब से डिजाइन होता है। ट्रैफिक इंजीनियर और हाईवे इंजीनियर मिलके, या फिर आपको गवर्नमेंट डायरेक्ट बता देती है भाई मुझे तो 3 लेन का चाहिए या इतना मीटर वाइड चाहिए। जब आपको ये पता चल जाए कि मुझे कितने मीटर का, मतलब या तो 3 लेन रखनी है, 2 लेन रखनी है, 4 लेन रखनी है, फिर एक आरडीएसओ की ड्राइंग होती है ये नॉर्मल अरेंजमेंट की। आप इसको डायरेक्ट उठा के डायरेक्ट यूज कर सकते हो, इसके लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से इसमें मेंशन है आरडीएसओ, तो पूरे इंडिया में कोई इसको नहीं रोकेगा। अब इससे डिसाइड होता है हमारे कितने गर्डर आएंगे कितना स्पैन के हिसाब से। जैसे अब मेरी अगर वो चाहते हैं क्लियर कैरेज वे विड्थ 10.5 रखना, मतलब 3 लेन के लिए, या फिर वो चाहते हैं 10.5 रखना बस एक साइड फुटपाथ आए, इसमें क्या है 2 साइड फुटपाथ आएगा, इसमें एक साइड आएगा। फिर ये एक और नीचे अरेंजमेंट है ये 10.5, इसके लिए छोटा आएगा लेकिन विदाउट क्रैश बैरियर आएगा। ये भी देखा होगा काफी ब्रिजों के विदाउट क्रैश बैरियर भी होता है, विद क्रैश बैरियर भी होता है। अब इसमें छोटे छोटे हैं विदाउट क्रैश बैरियर, ये कितने 750 के, जहाँ पे मतलब कहीं गाँव में बना रहे हैं तो वहां पे आबादी इतनी होती नहीं, देयर इज नो नॉट मच पीपल इन एनी रूरल एरिया, तो वहां पे ये प्रेफर कर लेते हैं। फिर और नीचे जाते हैं, अब मुझे अगर 7.5 कैरेज पे विड्थ रखनी है और दोनों साइड को देनी है, जनरली कॉमन ये होता है कि तुम्हारी 7.5 कैरेज पे विड्थ होती है और एक साइड तुम्हारा ये रेलिंग होती है और वॉकवे होता है, और दूसरी साइड फिर इसका दूसरा अरेंजमेंट होता है। मतलब 2 लेन कैन गो ऑन दिस ब्रिज एंड ऑन दिस अरेंजमेंट, एंड 2 लेन कैन गो राइट साइड अरेंजमेंट, तो इसका मिरर हो जाता है साइड। यानी दोनों को यानी यानी सिंगल जो वन वे ट्रैफिक है, यानी जो 2 लेन्स वन वे ट्रैफिक के लिए डेडिकेटेड है, उसको दोनों को क्रैश बैरियर दिए जाएंगे और दूसरे 2 लेन को भी उधर नहीं नहीं, ये एक तुम डिपेंड करेगा, अगर जरूरत होगी तो यहाँ पे बीच में क्रैश बैरियर आएगा,
वरना तो ऐसा होता है बहुत से ब्रिज में एक ही साथ हाईवे चलता रहता है विदाउट एनी क्रैश बैरियर, सिर्फ वो व्हाइट मार्किंग कर देते हैं. अच्छा. So it depends. It totally what that is what I'm telling. You can also create another one by just mirror of it. If I provide just like here, and it will be mirror to it, then crash barrier also will come. So that is median crash barrier. Then you will have carriageway of 7.5 again, like four lane, 2 for going, 2 for upcoming. Yes. So this is just for deciding your number of girder, because girder spacing is generally always remain 2.5. तो जब हमारा ये डिसाइड हो जाता है, इसके बाद अगर what will happen if this drawing is little bit old, but if we get the updated copy, we can directly use our bearing reaction from it, and we can directly start designing our substructure foundation without any bother to superstructure. But superstructure drawing will be different. That will be look like this. So this is for 36 meter span common steel girder. Like this will be look like this kind of thing. This is just the plan. This is the elevation. Then this is the plan. Half top, half bottom. It will be mentioned. I think just half top, half bottom. Yes. Because why it is showing like this, bracing will be there. Your this will be there. Here is a top plate connection, bottom plate connection, your web connection, then this connections, and there will be other drawings also. This will be your mid diaphragm bracing. This is cross bracing plus top and bottom also, and you have end diaphragm. So let me close this kind of thing. We will use. Okay, we will try to. Then we have these drawings do not require any approval. Nothing have been required. You can directly. As it is, they will be executed on the site. They can be directly executed. Do not require any approval or any kind of thing. This is slab drawing. Then I think some other drawings are also there. This is bearing. Even you will get the bearing drawing also. And this is some nodes are also there. And this is the connection one. How it will be connected. Then some nodes and other things will be there. One drawing will be only for nodes and BBS. This is the BBS drawing. How much plate will going to use? How much assembly drawing that was. These are the nodes, and one more last one. This will be the first one. Yes, this is the arrangement one that I have shown you. So that have been updated like this. Generally, what they have updated this table, so we can directly use this table or this one. So you can see this red mark is totally done by the RDSO, and their sign have been also mentioned. So generally what they do not update in the CAD, they can directly update even with the PDFs also. So that needs to be checked with the railway. You cannot directly use it. You can give the drawing to railway that we are going to use, so they are okay, you can use it. So that is the thing. बराबर, उनका ट्रैक विड्थ तो फिक्स्ड ही रहता है, तो फिर ये तो which this track width, हाँ, उनका ट्रैक की विड्थ तो यूनिवर्सल नहीं होती. ट्रैक विड्थ आल्सो चेंजेस because sometime narrow, sometime normal, and sometime wider one. Broad gauge. So it depends which freight will going to come on the track. कौन सी ट्रेन कौन सी ट्रैक पे आएगी, उस हिसाब से हमारी ट्रैक की विड्थ भी चेंज होती है. सिंपल. अच्छा, गुड्स एंड गुड्स के लिए हमेशा वाइड ट्रैक होता है 1.67 जिसकी स्पेसिंग होती है. नॉर्मल के लिए फिर 1.5 भी यूज होता है, फिर स्मॉलर के लिए तो 1.2 जाता है. ये चेंज होती है. ये डिपेंड करता है ट्रेन कहाँ से कहाँ तक और कितना चल रही है. तो अगर फ्राइट ट्रेन है तो उसके लिए तो हमेशा वाइडर वाला ही यूज होता है, 1.67 वाला. मेट्रो में भी ज्यादातर वही यूज होता है. तो अगर जहाँ पे थोड़ी आपकी स्पीड ज्यादा हो जाती है या लोड ज्यादा हो जाता है तो हमेशा वाइडर ट्रैक यूज होते हैं. लेकिन अगर कोई लोकल ट्रेन चल रही है जस्ट वन स्टेशन टू अनदर, और like in Mumbai, so maybe they use a normal one and the smaller one, because these tracks also depend the capacity, but it is not required for us. We are designing railway overbridge.
not a railway bridge. A railway bridge is different, and railway overbridge is different. Okay, You sir. we generally call it also ROBs, हम्म, railway overbridges. yes, sir. So ये सब रहता है, तो हम क्या करेंगे, we will take one GAD, we can follow this one. So in generally we do not need to design for superstructure. If you have this kind of this is known as what we call it, I just forgot the name. Wait, these are approved span, like we do not require any other information. Yes. These are obligatory span. So the obligatory generally are which are already designed, and you can use the superstructure directly, like 18 meter, 24 meter, and 30 meter, 36, 48, 50, 52, 48, 54, 56 around, then 62. Then we have 72. So up to 72, I have seen, maybe more than that. RDSO right now are designing or not confirmed. So it totally depends, like what are other span will be available. So if any non-obligatory span will come, like if you get it 28 meters or if you get 15 meters, so for that we need to design. अगर हमारा obligatory span नहीं आया तो हमें फिर डिजाइन करना पड़ेगा सुपरस्ट्रक्चर. तो सबसे पहले कोशिश यही होती है कि रेलवे बाउंड्री ऐसी जगह बनाई जाए ताकि ऑब्लिगेटरी स्पैन यूज हो सके. तो ये रेलवे इंजीनियर एंड हाईवे इंजीनियर एवरी मतलब पीडब्ल्यूडी इंजीनियर के साथ ही रख के ये वाला सर्वे होता है. उसी हिसाब से फिर ये स्पैन डिसाइड करने होते हैं कि ऑब्लिगेटरी स्पैन ही यूज करने हमें हमें नॉन ऑब्लिगेटरी स्पैन यूज ही नहीं करने, ताकि टाइम बचता है, डिजाइन बचता है, कॉस्ट बचती है, हर चीज सेव होती है, और आरडीएसओ जो काम कर रही है उनका भी यूज होता है. वरना तो रेलवे के लिए तो सारा काम आरडीएसओ ही करती है. रेलवे का आरओडब्ल्यू तो फिक्स होगा ना सर? हाँ हाँ फिक्स है ना, मैं बताता हूँ. दिस इज फॉर 36 मीटर फिक्स, बट इफ योर स्पैन इज नॉट फिक्स देन यू नीड टू डिजाइन इट 30. जैसे डिफरेंट स्पैन फिक्स हैं आरडीएसओ के हिसाब से, आरओडब्ल्यू के. तो हमारे 18 मीटर, 24 मीटर, 30 मीटर, 36 मीटर ऐसे करके फिक्सिटी चलती है. लेकिन अगर अब जरूरी नहीं है कि वो हमेशा फिक्स रहे. कभी कभार चेंज भी हो जाते हैं, कभी कभार हमें क्लियरेंस नहीं मिल पाता, कभी स्टेट डिपार्टमेंट और रेलवे डिपार्टमेंट बाउंड्री के लिए लड़ाई कर बैठते हैं, तो उस चक्कर में हमारे नॉन ऑब्लिगेटरी स्पैन आते हैं. तो वो फिर हमें वो डिजाइन करने पड़ते हैं कि नॉन ऑब्लिग. ये भी इसी के दायरे में डिजाइन कर सकते हो आप. जो ये मैंने अभी एक और ड्राइंग दिखाई ना, रेलवे वाले फीचर लाइन एक्सटेंशन के लिए मार्जिन पकड़ के चलते हैं. हाँ, तो इसके लिए डिजाइन कर सकते. अगर ये अरेंजमेंट चेंज हो गया आपका ऊपर का भी टॉप का, तब भी आपके लिए वैलिड नहीं होगा. और ये सिर्फ 20 डिग्री स्क्यू के लिए वैलिड होते हैं. 20 मीटर 20 डिग्री स्क्यू से ज्यादा अगर मेरा रेलवे ओवर ब्रिज आया तब भी हमें डिजाइन करना पड़ेगा. तो बहुत सारी कंडीशन अप्लाई होती हैं. अब इसमें जनरली क्या होता है कि जैसे मैंने अभी जीएडी के दिखाया था, स्ट्रेट अप्रोच पोर्शन में हम आरसीसी गटर या पीसीएससी गटर रखते हैं, और रेलवे पोर्शन में आते ही स्टील गटर में चले जाते हैं. तो जो स्ट्रेट पोर्शन का है वो तो सारा डिजाइन होता ही होता है, उसमें कोई हमारा वो नहीं है. आरडीएसओ की बनाई हुई ड्राइंग अवेलेबल नहीं है या एनएचआई की, क्योंकि उसमें हर कोई अपने हिसाब से डिजाइन इकोनॉमिक करना चाहता है या स्पैन चेंज करना चाहता है. वो उस वहां पे कुछ भी अनसर्टेनिटी क्रिएट हो सकती है, लेकिन रेलवे में अनसर्टेनिटी क्रिएट नहीं होती और वो हमेशा परमानेंट रहते हैं. तो इस वजह से ही ये वाली ड्राइंग यूज करना ज्यादा बेटर रहता है एज कंपेयर टू योर मेकिंग योर ओन ड्राइंग्स. पहली बात, ये ड्राइंग बहुत ज्यादा रिसर्च, क्योंकि आरडीएसओ की फुल फॉर्म यही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट समथिंग, आई डोंट नो, स्टैंडर्ड रिसर्च डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्ड समथिंग, but its office in the Lucknow, even one junior has been selected, so it have same exam like a scientist level exam, because this give you the post of scientist something. So that is fine. This is for railway development and standard something.
So like this is very old 2013 drawing. Right now 2023. So I do not know what are the updates have been there or not. So we will use we can use this GAD. We will model the higher one. This is the 36 meter span. We can easily able to model it. Now before modeling, there is so one second. One moment. Just wait one moment. Sorry for that. So what we'll try to do, we'll try to model this one. If we able to model this one, that will be fine. So it has 4 girders, and the most eccentric, if you see this one, and from this one, and in between the spacing is around it is 3.5, 2.5. So 2.5 half will be 1.25 plus 1.3 on one side, and we will model it for the 36 meter span. This, if you look at this middle one, we are not considering anything skew, so even this is fine. So another span is 24 meter, and this one 36 meter. So I just we will create the sample. Now here Midas also have one more thing which you can use it, but I will not want to show it right now. Here is one module which is known as a steel composite bridge. If I use this module, I can directly able to model whole bridge by just this template. So this you can also able to use, but right now I'm not using because it is a little bit right now maybe complex for you. So maybe in the complex bridges, it is very good, like balance cantilever or like FFM forward moving or forward cantilever or suspension bridges or cable stay bridges. This thing is very good. But for this normal bridges, we can able to directly create it. Just create node. सर हाँ यस सर मैंने आपको कल कुछ बोला था। हाँ अविनाश, वो मैं तुम्हें बताऊंगा एग्जांपल जब इसी के साथ जब हम ब्रिज में आगे बढ़ेंगे, ठीक है? पहले हो जाता वो जाता जो बेसिक थोड़ा एग्जांपल होगा उसको ना मैं तुम्हें इसके थ्रू फिर वैलिडेट कराने की कोशिश करूंगा कि तुम्हें पूरा एक एक चीज समझ में आ जाएगी डायरेक्ट कि कैसे क्या डिजाइन हो रहा है। सर थोड़ा क्योंकि पहले हो जाता तो बेसिक थोड़ा क्लियर हो जाता। तुम या तो एक बार इसकी तुम्हारे पास एम सुब्रमण्यम है ना? हाँ एक बार एम सुब्रमण्यम में डिजाइन ऑफ बीम खोलना उसके लिए बाय डायरेक्शनल बेंडिंग के लिए एक बार वो चैप्टर पढ़ के देखो, फिर तुम थोड़ा खुद से पढ़ोगे, जब मुझसे सवाल पूछोगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। एकदम नहीं आ पाएगा, मैं बता भी दूंगा तब भी नहीं आ पाएगा,
हल्का सा खोल के देखना, पढ़ के देखना। तो मैं वो ढूंढ रहा था, मुझे मिली नहीं, तो मैं दोबारा ढूंढ के कल अगर मिल जाती है मुझे तो होपफुली मैं समझा दूंगा उसको। ठीक है। क्या बोले सर, पढ़ाई यार। अभी तो हम मिडास वैसे डील कर रहे हैं, डिजाइन में नहीं जा रहे। मॉडलिंग तो समझ में आ रही है ना, मॉडलिंग डिफरेंट है, मॉडलिंग डिजाइन से, मॉडलिंग करने से कॉन्सेप्ट अगर नहीं मिलेगा तभी मॉडलिंग करने से कोई नहीं। फायदा नहीं नहीं। नहीं, हमेशा दो चीजों को ध्यान रखना। डिजाइन का 5 साल बाद कोई कुछ नहीं पूछता। हर कोई पूछेगा कि तुम्हें एनालिसिस कैसे आता है, किसी हाँ को फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली। डिजाइन डिजाइन एनल तुम एनल एनालिसिस का भी पार्ट तो उसमें आता है ना सर, न्यूमेरिकल के अंदर। नहीं नहीं नहीं, एनालिसिस तुम्हारा सारा मिडास से ही रहेगा, एनालिसिस उसमें नहीं जाता आपको तुम्हारा। फ्रेमिंग, एनालिसिस या हाँ। तो तुम मैनुअली करोगे, एनालिसिस का पूरा अलग है भाई। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ा था ना एनालिसिस, हाँ वो बिल्कुल अलग है। एनालिसिस बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, डिजाइन बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। दोनों को yes, कंबाइन करना होता है, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि अभी कंबाइन हो रहे हैं। तो ये जो पार्ट होता है ये सारा एनालिसिस का है, इसमें डिजाइन कुछ इन्वॉल्व नहीं है। स्टील गटर भी सेम एनालिसिस होगा जैसे हम कंक्रीट करते हैं, लेकिन हम्म। सम स्पेशल पैरामीटर रहेंगे, जैसे ब्रेसिंग को मॉडल कैसे करेंगे या उसका एनालिसिस कैसे होगा। लेकिन जो डिजाइन जैसे जो तुम पूछ रहे हो ना एन सिर्फ डिजाइन है, एनालिसिस कुछ नहीं मिलेगा उसमें। हाँ हाँ, बराबर तो है सर। क्योंकि डिजाइन। फ्रेमिंग एंड तो मॉडलिंग, ये फ्रेमिंग मॉडलिंग एंड एनालिसिस ये बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट है। नहीं आप नहीं, अगर ज्योमेट्री जैसे मॉडलिंग, तुम हाँ हाँ, अविनाश, और भी जैसे तुम रिक्वायर्ड। अपने करियर में आगे बढ़ते जाओगे, नो वन विल आस्क यू हाउ टू डिजाइन इट, बिकॉज एवरीवन नोज यू कैन डिजाइन इट विद एनी कोड एनी बुक, नो वन विल केयर। बट हाउ यू एनालाइज द स्ट्रक्चर, दैट इज द मेन थिंग, बिकॉज यू everyone want to know how you are getting the forces, and no book teaches you how you are getting forces yes, until unless you have something advanced available, yes, because these are become indeterminate structure. For determinate structure, if I model normal one beam for only support condition, normal support condition, pin condition, that is fine. But here we have to represent bearing, we have to represent what should I call it, this bracing. So those things are not, and also the our slab that will be the part of your steel gutter as a by composite action. So those things generally no book will going to explain. Every book will give you just a normal beam design. Not even analysis will be same. If you have book does not know if you have a steel gutter, if you have concrete gutter. That's what I'm telling. Just read book, and I will also find it, so we can have a common discussion. Otherwise, you will get confused. I teach you different things, and you will that this is not. Uh, bridge thing, or maybe not as per my understanding, because that book have a vast majority of steel, you can say, design, not only bridges, steel building, PBs, like PBs are industrial structure. Then you will have the connection and different kind of connection. Then you have compression member, tension member, compression plus tension plus bending. So these are a lot of designing in steel. Steel is totally different if you compare with the concrete or PCSC. So that's what I'm telling. I am only teaching for the bridge, but steel is very vast. You can say this is branch which can be used as a column also, as a beam also, as a pier cap also, and anything. Steel can be converted into anything, but you will not find it in the bridges because this is very costly. So if you consider only one subject steel, it is very vast. Even I cannot able to teach you the whole steel. Even no one knows, even everyone who is working right now, no one knows the whole kind of steel. So right now, that's what I'm telling you yesterday also. I'm focusing on the analysis right now. When we go into the design, so I will take the example from the book and will try to explain to you. Because right now we are not doing design. Design is totally will be different. You are confusing in the analysis and design. You got my point? हाँ, क्योंकि कैसा है यहाँ पे सर, हमें जीएडी मिलता है एंड हाँ हाँ। जीएडी को आपको फिर मॉडलिंग में कन्वर्ट, यानी ज्योमेट्री बनानी पड़ती है, फिर उसको नहीं तो अकॉर्डिंगली। आपको बहुत सी जगह जीएडी भी नहीं मिलेगा, आपको जीएडी अपना भी बनाना पड़ सकता है. हाँ It's not that like that you will get the GAD. If you are doing DPR,
or if you are doing preliminary design. So for that you will have only survey available. Then Yes. you need our highway profile available. So Yes. you need to put the this bridge span arrangement. You need to arrange your bridge span so you will have a similar result. Like if I want to use 30 meter span or 25 meter span or maybe 45 meter or some continuous span and some discontinuous span. So that will be required when you have some data highway profile. Then we put it all the normal span like simply supported. We give it to the third party approval, whoever approving, and also the government. Then government changes that I do not want this span, make it continuous. I do not want this spacing, change it this, or they will identify these all point on the ground. Then we check if any hindrance are there, or maybe if you find any drain or any existing building or any kind of maybe shop will be there. So then we remove, then change it. So after that, even in the detailed design, surveyor needs to identify that bridge should be at proper place. You will not find any utilities or any other thing. Then otherwise we need to adjust our span. So this is kind of repetitive task. We need to adjust every time when we go until unless this everything substructure foundation have been completed. Then we know our superstructure span have been fixed. Otherwise, things changes with the progress of our bridge, even with the progress of bridge. It's not that simple. Sometimes high tension cable comes, high tension anything can come. So maybe that needs to be shifted, or maybe our alignment needs to be adjusted according to that. So there are a lot of things involved initially for the bridges. But when it comes into the detailed design, everything should be finalized. You cannot work on the assumption. Like this GAD is final GAD. So they have done the survey, they have marked the railway distances, everything. Then they have created. This is not the preliminary GAD. And they have even mentioned everything. That's what I try to model with this one bridge, this one span. You can design this one. This will be valid for this one also. So that's how generally design work in the steel bridges. You can design one arrangement and it will be going to be valid for another arrangement. Then this substructure foundation is not fixed. This needs to be designed. This is just preliminary, because we might not require this. You can say this much big pier. We can able to reduce this. But generally in all the ROBs, this wall type pier are the most common because of railway moving at higher speed, and also it generates one wind with it. We normally do not calculate that wind, but it's actually there. So if you have seen it, always these wall type piers are there in ROBs all the time. Normal piers are very rarely you will see, and that will be if contractor want to save money something, then it come. Otherwise, railway will not. Avinash, you are clear for that we are not designing right now. We are dealing with the analysis part. Okay, sir. Hello. Yes, sir. No, I will teach you. The design is different. That is what I'm telling. Design is totally different. Analysis is totally different. Analysis, if you want to learn, then you will be same theory of mechanics. Then you need मैं to सच बोलूं find सर, out the reactions. मैं सच बोलूं हाँ, सर, एक बात, आपने अभी तक जो भी हाँ, पढ़ा है उसमें मुझे सिर्फ 10% पढ़ा है। अभी तक जो भी हाँ, हाँ, कंक्रीट से लेकर अभी तक अब जो भी पढ़ा है मुझे उसमें से 10% ही आता है। क्योंकि तो उसमें ऐसा हो रहा है क्योंकि तुमने शुरू से ब्रिज में इन्वॉल्व नहीं रहे। हाँ, जो और लोग हैं तो वो ब्रिज में इन्वॉल्व हैं, हाँ, तो मैं जनरली जो तुमने बताया था। हाँ, मैं इसीलिए बोल रहा था मुझे बेसिक चाहिए 4-5 लेक्चर, तब भी हो पाएगा। नहीं तो बेसिक जो ब्रिज का बेसिक है ना, वो मैं बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ। जैसे मैंने पिछली क्लास में सिर्फ बेसिक ही एक्सप्लेन करा था और कुछ हमने डिस्कस नहीं किया था। नहीं, वो ठीक है, मुझे थोड़ा सा अभी दिक्कत हो रही है, मुझे पता चल रहा है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मेरा मनी वेस्टेज जा रहा है, सच बता रहा हूँ आपको।
हाँ वो आपको लगता है क्योंकि प्रैक्टिस जब मैं प्रैक्टिस कर रहा समझ हूँ, में नहीं आ प्रैक्टिस। पाता, अब समझ में मुझे नहीं आ पाता तो भाई कोई भी यही समझेगा, जैसे कॉलेज में हमने क्लास अटेंड करी, फीस भरी, बट डिग्री मिल जाएगी एंड में, है डिग्री ना। लेके क्या ये करना है सर? हाँ तो ये जैसे बहुत वही ही ऐसे ही होता अलग है कि जैसे इंडस्ट्री है, कॉलेज बहुत में ही तो कोई अलग। पढ़ता है नहीं, हाँ अंटिल वो या तो टीचर खुद ही मार मार के पढ़ा दे, या नहीं, कोई हम उनमें से नहीं थे सर, हम सिर्फ क्लास में ही पढ़ते थे, बाकी दिन मस्ती मारते थे उसके हाँ तो उसमें वही से। ना, कोई नहीं पढ़ता मतलब, अब अगर पढ़ा भी है तो किसी को याद नहीं रहता क्योंकि वो हम यूज नहीं करते। एक्चुअली ब्रिज पढ़ा ही नहीं कभी मैंने, इसलिए मुझे कुछ बुझा ही नहीं, कुछ याद ही नहीं आता मैंने इसलिए। ये इनिशियली क्या बताया था, ब्रिज कुछ है नहीं खास, नॉर्मल बीम को ही जब तुम स्पैन बड़ा कर देते हो कोई ब्रिज बन गया, तो हम वही कोशिश करते हैं। तो अगर तुम्हारे पास बिल्डिंग, यही मैं कह रहा था कि तुम्हारा जो है ना, तुम्हें बिल्डिंग बिल्डिंग में भी ज्यादा एनालिसिस नहीं करा। नहीं नहीं, बिल्डिंग में अगर आप बताते, मैं बिल्डिंग में सब चीज मुझे पता है, क्या है प्रोसेस क्या नहीं, क्योंकि मैंने बिल्डिंग तो, में पढ़ रखा है, मैंने कर रखा है तो ये इसलिए। बिल्डिंग को कन्वर्ट करो ना ब्रिज में, यही तो होता है। बिल्डिंग जो हम करते हैं, बिल्डिंग में क्या होते हैं, छोटे स्पैन होते हैं, मुश्किल से 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर। 7 मीटर तक मैक्सिमम जाएगा, उससे ज्यादा तो देते भी नहीं है, हाँ, मतलब डेप्थ बहुत बढ़ जाती है। 5 मीटर तक हो जाते हैं जनरली, या कोई जनरली हो। 5 में इनफ है सर, इनफ। हाँ तो बस ब्रिज में हमारे स्पैन क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं, वो चले जाते हैं 20 मीटर, 15 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर। पहला तो फर्क स्पैन का आ जाता है। दूसरा, जो आपके बिल्डिंग में कॉलम है वही हमारे इसमें कॉलम है, लेकिन फाउंडेशन में फर्क आ जाता है, वहां पे ज्यादातर राफ्ट होती है, या हमारे पाइल और ओपन फाउंडेशन होती है, और राफ्ट जैसी। पियर सेम ही रहता है दोनों में, कोई चेंज नहीं है। बस दूसरा फर्क क्या आता है, ब्रिज जो जो सुपर सुपर स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें कंपोनेंट होते हैं ब्रिज में। जैसे बिल्डिंग में कंपोनेंट होते हैं बीम, कॉलम, स्लैब, ब्रिज में कंपोनेंट क्या होंगे, सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर, फाउंडेशन, फिर उसके डिफरेंट कंपोनेंट हो जाते हैं। हर चीज को आप एक एक कंपोनेंट में डिवाइड करो तो हर चीज आसानी से समझ में आएगी। जैसे बिल्डिंग को डिवाइड कर रहे हैं हम, हर एक कंपोनेंट में, कॉलम में, शियर वॉल में, राफ्ट में, लेकिन उसका क्या पर्टिकुलर नाम है। अब ब्रिज में सुपर स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट कंपोनेंट हो जाएंगे, कि मेरा बीम अलग होगा, स्लैब अलग होगी, ब्रेसिंग अलग होगी, एंड डायफ्राम अलग होगा, मिड डायफ्राम अलग होगा। इतने सारे कंपोनेंट सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर में ही आ गए। अब फिर तुम जैसे आ गए सब स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर में क्या आएगा, पेडिस्टल आ गए, बेयरिंग आ जाएगी, पियर कैप आ गया, पियर आ गया, ये डिफरेंट कंपोनेंट हो गए। अब फाउंडेशन में दो ही कंपोनेंट होते हैं या एक ही होता है, या तो आपका पाइल पाइल कैप बनेगा, या ओपन फाउंडेशन बनेगी जो राफ्ट ही होती है। तो फाउंडेशन में इतना फर्क नहीं है, लेकिन सुपर स्ट्रक्चर जो होता है, और वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्रिज में, अगर वो क्लियर हो जाता है किसी का, तो सब स्ट्रक्चर, फाउंडेशन तो हर जगह रिपीट ही होते हैं, वो चेंज नहीं होते आपके। या तो कॉलम सर्कुलर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, या वॉल टाइप हो जाएगा, बस उससे ज्यादा क्या फर्क पड़ता है। वो हमेशा सिर्फ स्ट्रक्चर फाउंडेशन में चेंज आएगा। सुपर स्ट्रक्चर का जब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि कैसे एनालाइज हो रहा है, क्या कर रहे हैं, तब तक चीजें नहीं आएंगी समझ में। इसलिए सुपर स्ट्रक्चर बहुत, और ब्रिज की डिफाइन किससे कर रहे हो, सुपर स्ट्रक्चर से ही डिफाइन कर रहे हो। मतलब स्टील ब्रिज है तो सुपर स्ट्रक्चर स्टील है, और कंक्रीट ब्रिज है तो सुपर स्ट्रक्चर कंक्रीट है, पीसीएससी है तो सुपर स्ट्रक्चर पीसीएससी। तो ब्रिज आर्च है शेप में सुपर स्ट्रक्चर, तो आर्च ब्रिज बोलेंगे। तो ब्रिज की डेफिनेशन ही सब कुछ सुपर स्ट्रक्चर से है, और सुपर स्ट्रक्चर ही मेन होता है। मतलब अब सुपर स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि आप बेयरिंग पे टिकाओ, डायरेक्ट कॉलम के साथ अटैच करोगे तो वो फिर इंटीग्रल बन जाएगा, जनरली तो बेयरिंग पे ही होता है। तो मेन चीज तो बेयरिंग है, मैंने शायद बेयरिंग तो पूरी एक्सप्लेन करी थी एक बार, और तुम उसको देखना। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ, देख चलो, रहा हूँ। मैं बात हाँ, करता हूँ अमन से कि कोई मसला नहीं है, हो जाए। और क्या था, हाँ जैसे हम थे इस पे, अब ये समझो, मतलब अब तुम्हें ना एक बीम मॉडल करनी है, सिंपल बीम समझो, और चाहे बिल्डिंग की हो या नॉर्मल बीम हो, लेकिन हमारे पास ड्राइंग अवेलेबल है पहले से ही ये वाली। इसके हिसाब से हम मॉडल करना चाहते हैं कि कोशिश करें कि ये सेम अरेंजमेंट फॉलो हो जाए। So if you want to do normal beam, generally this is steel beam only. I require this bracing point because I need to provide bracing. तो इसका पॉइंट होगा डिस्टेंस देख मैंने भटक क्यों रही है, ब्रेसिंग एक ये डिस्टेंस दिया हुआ है 4.9 to 7.5, ये इसका डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का। और ब्रेसिंग भी हमारी देखो सपोर्ट से चालू नहीं हो रही है, थोड़ी बाद में चालू हो रही है।
लेकिन हम मॉडल करेंगे इसके हिसाब से। ये वाला जो पॉइंट है आपकी, ये मेरा बेयरिंग सेंटर है। तो बेयरिंग सेंटर से जो वो निकल रहा है मेरा बाहर, वो निकल रहा है 0.45। उसके बाद नेक्स्ट स्पैन आ रहा है 4.927.5। देन what is this up to this to this splice. Okay, we can able to take because then again यहाँ पे आएगा, और उसके बाद अगला वाला इधर है। ओके, एक ब्रेसिंग ऐसे है, एक ऐसे। सर Then क्रॉस गटर है कि सिर्फ ब्रेसिंग है क्रॉस में भी? which नहीं, क्रॉस गटर भी है, आई हैव सीन यू ना, लेकिन वो बहुत छोटा है। मतलब अच्छा, क्रॉस अच्छा। गटर नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेसिंग ही बोलते हैं स्टील में। वो उसमें नहीं आती है। ये होता है ऐसा अरेंजमेंट होता है। ये पूरी प्लेट आएगी, इसके साथ ये जुड़ा हुआ होगा और ऐसे करके, और ये अच्छा, होती है अच्छा। स्पेस ट्रस है। ये यहाँ से यहाँ भी जा रही होती है। अच्छा, अच्छा। Sir, mid-cross girder is there, sir. हाँ End cross girder, mid-cross girder, both are there. हाँ, not, we generally do not call it the cross girder, we call it the space bracing type, space cross bracing, because there will be crossing like this also, space truss. We have only hand diaphragm, but other places you do not require we do not call it diaphragm. We always need to be call it like when I create it, I will tell you what it means by space truss. Space truss means all three direction will go into you. In this you can only see the two direction, X or Y, but this perpendicular direction also going to be used. So first I need to create according to the same one. The 0.45. center one is bracings, na sir. This, yes, these are bracing, all are bracing, everything. Even this is also bracing. So 0.45, let me just input here. We can use the command extrude. Unequal distance, Z direction. 0.45, 4.927, 275, this is this midpoint. If I add those, it will be 3782. Point 5, 6.15. अभी सर 3 पॉइंट कुछ था ना? कनेक्शन पॉइंट नहीं लिख रहा है ये वाला ना, कनेक्शन पॉइंट नहीं, ये 0.42 फिर 4.92 समथिंग हाँ, लिया। ये जो पॉइंट है इसको हम हाँ। बाद में भी डिवाइड कर सकते हैं, मैं यही दिखा रहा हूँ। अभी हम इसको मॉडल करेंगे। ये जो पॉइंट है ये हमारे कनेक्शन का, इसका मतलब ये होता है जो तुम्हारी स्टील का यहाँ से लेके यहाँ तक पोर्शन बनना है ना, ये एक असेंबली बनती है। ओके। तो जब हम यूज करते हैं तब काम आता है ये देखो, ये असेंबली है 9.160 की, यहाँ तक होगी ये, क्योंकि हमारी प्लेट्स जो आती है हमेशा 12 मीटर की आती है। तो मैं अभी असेंबली को यूज नहीं करना चाह रहा, पहले मैं मॉडल करना चाह रहा हूँ as per this end diaphragm or as per this connection. So I will able to show you the bracing, how it will going to look like. This is we can create even after our modeling also. So another one is again 4.645. 4.645. Now if you look at here, this is again repeating 2.2. Yes, Yeah, 2367.5 you missed, sir. So it will be 3782. It is coming, but this is not same. If you are looking, No, this side 2367 is there. No, that one you have not calculated. where is 2367? You are saying, this one is 2367. And here is 227. No, left side. 227. Left side. लेफ्ट साइड सर Left side we have already considered na. 2.367 That is not added, sir. sorry No, 23 added. I will show you. Wait. 7
Wait a minute. Because let me just clear to it. I will show you what I have. Okay, 1 minute. 2.2. It is coming around 6.0595. I will tell you what happened. तो थोड़ा जूम कीजिएगा। 6.059। ये मैं जूम नहीं कर पाऊंगा, तो मैं अपने उसमें करना पड़ेगा, जूम में ही, क्योंकि मेरा ओके ओके ये पूरी स्क्रीन फिक्स होती है। अब ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, पहला पॉइंट जो हमने चालू करा जैसे 0.45, ठीक है, वो क्लियर था। दूसरा पॉइंट क्लियर था 4.9275। अब तीसरा पॉइंट मैंने लिया है 6.15। अगर तुम इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करो 2.3675 को प्लस 3.82.5 को, हाँ तो ये आपको देगा 6.15। ये ऐड करके देख सकते हो अगर देखना। तो ये मेरा डिस्टेंस आ गया अब यहाँ तक। फिर दोबारा मुझे अगेन इतना ही चाहिए होगा, सर 4.92। फिर से बताइए सर। इसको ऐड करो 3782, 3.782। पहले पहले आपने लिया 0.45, हाँ, फिर ये लिया, ठीक है। फिर ये लिया। अब मैंने इन दोनों को कंबाइन लिया, मैंने इसको इग्नोर कर दिया, कनेक्शन नहीं मॉडल कर रहा हूँ, अच्छा ठीक है। इन दोनों को कंबाइन कर दिया, फिर मैंने ये लिया, फिर मैंने कनेक्शन को इग्नोर करा और इन दोनों को कंबाइन कर दिया, ओके ओके। ठीक है। अब लेकिन इसके बाद क्या होगा, फिर दोबारा से ये आ जाएगा, ये 4.92। जब सर उसको एक बार ले फिर रिपीट क्यों करेंगे? क्योंकि वो मिरर है, ये देख रहे हो यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, ये आगे कंटिन्यू हो रहा है, ये देख रहे हो एरो। अच्छा हाँ। हाँ, तो और ये मार्क है कंटिन्यूअस का, ये गडर आगे जाएगा, क्योंकि हमें पूरा चाहिए होगा 36 मीटर, तो हम ऐड करके तभी पता लगा पाएंगे। तो Now half 4.9, is done, sir. Half is completed. Half length. more than half it's completed. Half will be around, I think, at this point. It will be, because connections are always at L/4 location. We cannot provide at any other place. So let me just check. I think half is not finished. Even 4 plus 6, 10 plus 4, 14, and we are modeling 36, 4 for 28. I think not. Let me check it. Is the full model have been shown or not? Generally in drawings, you will not see full kind of model. This is just the basic arrangement. One, let me check it how much we will get, then we will adjust accordingly. So here we required 4.97. So copy this. We can also copy in this. So now I have created up to this. Let me just check it how much it is giving. If I click from this point to, it is giving me right now 26. Yes, is pretty much less. So around 10 meter is missing. So we need to see how much one connection it will come here, one will be at here, and after that I think it will, this will come. Okay, okay. If I provided this one 4.645, मुझे तो okay, 4.645, how much it is remaining? Then again this. So I have provided this 4.9275 here. Before that, this is fine. I'm getting this much model. How much this was? 6.15, no? यस सर। 1.15. Yes.
and no arrow have been shown here. Let me see it. If arrow they are showing or not. This is fine. This is fine. You can see I'm modeling this thing. Where is the, this have been reduced it. Let me 6.15 is required. This is 9290. This is 36 point. That is fine. 4.450. 9290. And what is this? 91960. Then if 9290 plus 9160 into 2, we are getting 26. Then again plus 9290. Yes, this is fine. So one assembly is this. One assembly means one plate. One plate is this. Then another plate is this. Then after this point, we will have this same kind of plate. Like this one. We will have two 920 plates and two 9160 plates. So what are they showing? After this 3, 6, they are putting 2 to 7.5. So another plate will have 3782. So 3782 will not be here. Okay, this is fine. How much I need to provide another? Okay, maybe this plate is required. 3, got it. This distance then I provided 4.9. Then afterward, this will be 4.645. Okay. First, we have to provide this plate. After that, again, that plate we have to provide. Yes. Sir. What is happening here? Let me tell you what is happening. First, this plate is coming, then this plate, then afterward, this plate going to be repeat. So that's why this I mentioned this 3782. So this 3782 will match this one. So another distance will be this one 49275. That is fine. But afterward, what will be the distance? Afterward, I need to provide this plate. So this plate will be first one distance will be 4.645 and another distance will be adding of these two. So 4.65. Sir. One moment, just Okay. let me paste it. So I will 4.65 6645 4.6 and another distance will be adding of these two. How much it will be? 367.5 plus 227.5. What is this happening? .645. It is 4.645 again. Okay, both will be 4.6. Four point six four five. 4.645
comma point, and this point will be deleted, comma. Delete this thing. हाँ विनाश आप पूछो. You can see 335.99. So 1 mm you can leave it. So now it has become 36 meter. This one, and this is required for this that I need to connect it. Avinash, what are you asking? सर ड्राइंग पर आइए आप. हाँ ड्राइंग में. हाँ बताओ. ओपन कीजिए सर. पहला हाँ, पॉइंट आप पहला पॉइंट लिया देखो 0.45. ये लिया 0.45. एक मिनट से, एक मिनट. हाँ 0.45. उसके बाद आपने लिया 4.927. हाँ. करेक्ट. फिर आपने लिया Adding 6.5. of both these two. अच्छा ठीक है? ओके. इस दोनों को जोड़ के आप 6.15 लिए हैं. हाँ ठीक है, आगे बढ़ाइए. ये लिया. फिर ये लिया आपने. हाँ. ठीक है, फिर बढ़ाइए आप. फिर इन दोनों का ऐड किया. ये दोनों का ऐड किया. हाँ ठीक है. अब इन दोनों के बाद क्या होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये मेरा ये रहा पॉइंट. ठीक है, ये चीज है. ये हाँ यहीं पे है, ये देख रहे हो 3782.5. ये हाँ मैच कर रहा है 3782 पॉइंट. हाँ. अब इसके अपोजिट में क्या है, क्योंकि मुझे मिरर देखना है, तो इसके अपोजिट में है 4927. फिर ये लेंगे. हाँ 4927. ओके. ये ले लिया. तो ये हाँ. मेरी एक प्लेट कंप्लीट हो गई. अब मेरे पास बचती क्या है, ये वाली प्लेट बच रही है, ये वाली. अब ये वाली प्लेट बचती है. हाँ इसके बाद मैंने ये वाला ले लिया एक मिनट 4.645. से, एक मिनट थोड़ा धीरे धीरे. ये प्लेट बची था, उसके बाद आपने मतलब ये कंप्लीट हो गया. ये मतलब 4.6 से लेंगे आप. हाँ तुम चाहे तो इसको पहले ले लो, दोनों सेम आएंगे. इन दोनों नहीं को नहीं ऐड नहीं करो. नहीं, पहले लेने वाली बात नहीं सर. यहाँ कंफ्यूजन हो जा रही है मुझे. आप कभी उधर नहीं ले लो नहीं, कभी. पहले का मतलब नहीं है, तुम्हें इस प्लेट को यूटिलाइज करना है अच्छा और इनको एडजस्ट करने हैं. तो हाँ, तो- हम क्या करेंगे, हमें ये दो की जरूरत नहीं है, एक प्रोवाइड कराना है. ओके. ठीक है. तो एक प्रोवाइड में क्या होगा, एक 4.65 बना, दूसरा भी 4.65 का बन गया, दोनों सेम बन गए. अच्छा ठीक है. हाँ ऐड कर लो ना, इसमें समझ में आ जाएगा. देखो 2 3 हाँ, 6 7 और इसको ऐड करोगे तो वो इतना ही आ रहा है. ये So इसी 2 हिसाब से. times 4.645 you are using, na sir? हाँ 2. We So are you not will- using that first plate 4.94 something is No, there, no? it is like that. First plate, second plate, then first plate, second plate. No, can you tell once again, sir? First plate. First plate, second plate, then first plate, second plate. Now totally first we are having around 3 plates now, sir. First plate, second plate. No. First have 3 plate, but I have already provided in the this 4.5 is the extra after the base. That is okay. First plate is this 4.927. After that adding these two, that is one plate. Second Yes. plate. After Then that this. third plate is After this adding 4.6. Okay. Third This plate I is this know. I have seen. 4.645, na? After this, I have come to this one. So total 4 plates are there here. 4 plates are there. Yes, that is After what I'm that, telling you. fifth plate is this 4.927. This one, then adding of these two. Sixth one. What, sir? Then we will put this one. Okay. Fifth plate is 4.645. Another 6 plate will be also there by adding these two. This one and this one. This is also same 4.645. If you add this, you will get the same result. That why we are adding this and that, sir? Because we do not require this much less distance. We required minimum distance between our these diaphragm should not the diaphragm or bracing should be 4.65. So we can able to create like this kind of bracing. Okay. Otherwise, it is not. I'm just following the drawing. If you want to do your own, you can able to change it. That's what I'm telling. This is main-made drawing. It is already available. That's why I'm using it. But अब अगर किसी को चेंज करना है तो अपनी ब्रेसिंग चेंज कर सकता है. ये ब्रेसिंग कोई जरूरी नहीं है कि इतने पे फिक्स होती है. आप 3 मीटर पे यूज कर सकते हो, 4 मीटर पे कर सकते हो. ये मैं बताता हूँ, यहाँ पे स्टील को ऑप्टिमाइज करा जा रहा है कि यही सेम प्लेट बार बार यूज होकर कट बेंडिंग में. इसमें एक चीज देखी जाती है स्टील ब्रिज में, वो बहुत बाद में आती है. वो आती है, इसकी बनती है शॉप ड्राइंग्स. तो शॉप ड्राइंग्स में हमें स्टील प्लेट्स को ऐसे यूटिलाइज करा जाता है कि रिपीटेटिव टास्क हो जाए, एक ही प्लेट बार बार यूज हो जाए, सेम कटिंग में यूज हो जाए.
तो इस वजह से ये यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट है। तो Sir, ये tell शॉप in ड्राइंग बनने English के only, बाद, sir. हाँ Tell in English only, sir. Continue in English. it is in the steel. What will happen generally? We will have shop drawings. So generally, if anyone has worked with the steel, then only he can able to see the shop drawings. Otherwise, shop drawings have been made by at only factory, or maybe whoever going to make this steel erection or this. So shop drawings are required. Then after shop drawing, erection drawings are also required. So steel, that's why steel takes a lot of time, and we can able to maintain the quality. This is the normal drawing. This is the design drawing. This is only going to use for reference for our shop drawing. After shop drawing, we will prepare even the erection drawing. Erection drawing will mention that first plate will be going to be cutted, then bracing or this mid diaphragm or what we call it, stiffeners. This is stiffener. Then stiffener will come. Then our end stiffeners or mid stiffener will come. Then this holes will be provided, and then it will be transferred to site, or maybe it is whole girder will be erected at the site, or maybe at the your direct factory also. It can be possible both. So that why steel previously, I think very less people have been work totally the total project of steel. If you work, you do not, if you are normally working with the bridges, you will not able to see the shop drawing until unless you are work for any contractor. Shop drawings will not generally available to the designer because they are made by different methodology. Generally, they have been shop drawing have been made in Tekla, or maybe another. There is one more software known as BoCAD. Those generally software have been used, or manually it can be possible, but will take a lot of time if you do it in the CAD itself. Then after shop drawing, we need to make the erection drawing. So on site, you will have this normal drawing, you will have shop drawing, you will have erection drawing. 3 types of drawing available only for your steel girder or any kind of steel. So that's why steel is totally different as compared to the concrete. Concrete have only one drawing. You can do casting as per that drawing. Dimension drawing and the reinforcement drawing. No other drawing required. But steel have different drawing. Steel. So that this is why they have changed this to optimize your shop drawing construction. This have been done to optimize it. Otherwise, I can put it anywhere my bracing, no issue with it. But because RDSO also create the shop drawing of the same, because In shop drawing, what details will be there, sir? in shop drawing it will be look like only one assembly drawing. One assembly mean you will have this girder, we will name it assembly 1, not girder, it is a part of girder, and in assembly 1 we will mention this is one plate of this dimension like 850 into 45 into 960. Then you will have a stiffener going to connect it from this distance to this distance. Then there will be mentioned welding, how much weld and how much like 7 mm, 10 mm, 8 mm, 12 mm weld is required throughout this edge, that will be mentioned. Then after that it will be mentioning like this holes will be mentioned, how much spacing, everything will be mentioned. And also this connection between this web and this weld will be mentioned, and how much parts will be required for one assembly will be mentioned. Like this will have one plate, one stiffener left, one stiffener right, 2 stiffeners in the mid, 2 end bearing stiffeners, so 4 stiffener total, one web, one top plate, one bottom plate will be required, and then this welding information is required. So then they create the shop engineer required only one assembly at a time, because every engineer in the shop, a different engineer works on different parts. It is not like that one engineer going to be cast your whole girder. So that's why maybe one engineer will work only this part of construction, another worker will work on this part of construction. So he will work according to different shop drawing. This assembly will have different one. Then maybe another one will work on your bracing, another one will work on like maybe
cutting the stiffeners or maybe different parts like this gusset plates and everything. And there are a lot of parts involved in these steel bridges. So that's why shop drying needs to be prepared. But that only prepared at the casting yard, not like in the shop, our fabrication yard, not in the any other design office. Generally, if you have worked with anyone has worked with steel construction companies or fabrication companies, so they have seen it. Otherwise, you will not pretty much not anywhere. But this drawing is pretty much fine. It can be work as shop drawing, but still again, fabrication people create their own drawings by looking at these. Then you will have erection drawing. Erection drawing means they will mention this is assembly 1, this is assembly 2, they needs to be joined at this point. Then assembly 3 needs to be joined at this point, and this is type of connection will be required, and how much torque will be required for bolts, or how much because in this bolting there is required some torque is required, HGFC bolts, because these are high strength friction grip bolts. So that should be mentioned in your erection drawing. Then erection, like how assembly will going to join. First we make shop drawing how assembly will be created, then different how a different assembly will going to join, then there will be erection drawings. So generally normal if you work for any office you will not find until unless you work for the contractor or the fabrication uh, team, that only you can only able to see. So we have created this thing. So what we require right now, we require 4 girder at 2.5 meter spacing. So we will again easily able to create that by translate unequal distance y direction 3 at the rate 1.5. So this will be our girder. Now girder have been created. Now property is required. So we'll go into these section properties. First of all, we can define material also. So this is the material. Generally, it is 350. I think it is mentioned or not. Lower strength steel have been changed into high strength steel. I do not know in the latest drawing it has been updated. Let me see it mentioned or not. Here is the steel. Even you can see even they have mentioned young modelers poison may show for period of thermal expansion. No permissible. This is fine. You can see even fabrication should be done as per IRC bridge code, which should be used for railway bridges. Where is the mention? Generally, they have one normally in the middle they mention.
Okay, we will use that grade. This is 350 grade generally. So we will go. Even you can check here. Yes, you do not require for IRC different code. Steel one grade is okay. Yes. So we have around 4 grades are generally available. Mild steel at 250, and then we have 350, then we have 410, 450. Generally 275 and 300 are not commonly used. Very rarely, even I have not seen it. So most common is the mild steel, which previously structure we use it. Right now 350 or 410 or 450. 410 and 350 are high strength. 450 is also more, but you never find 550, which is used in the rebars. So we use for the plate girders 350. Apply. Now here will be most important thing, the section. Now in this we require composite one, so we'll go into the composite. Now if you look at here, this is steel box type, so we do not require this. We require steel I type. And here also one more thing. This you can able to choose. Even we can choose our distance from a reference line. Like we have different if we have different kind of B1 and B2 or TW difference, so we can able to adjust. So we will use this one. Then we already know this is a common one is steel I. This you can able to use. Steel tub is like this one. If anyone seen any bridge in Vasant Kunj in New Delhi, this is made up of steel tub sections. We will use this one. So first of all, slab. The slab here is 0.25, and there will be gap between slab also, which is generally 100 mm, 0.1. And what is the tau? Not B. This is how much? 2.5 for the mid. Tau C will be 0.25. Top bottom, yes, we will able to do. Now here, if you remember, Vignesh, we want to use the eccentric slab. So here we can easily able to do the for steel girder eccentric slab, because that will be required. Right, we will do it, but first of all, let me create this one B1, B2. Sir, what we will provide in the gap is steel and the slab 100 mm. This one 100 mm. Okay, I will show you even the drawing. That will be more clear. This is haunch. It's always come in this. This is 100 mm. You can see here. Yes, sir. So it's a common in every railway. Maybe I will show you the drawing of slab. Which one is 6? Not this. You can see 250, and this there is a haunch. This haunch. This is 100 mm. Not showing anywhere, but it is. We take it around in our. Let me see haunch dimensions where they have mentioned. This haunch is required. Otherwise, if you directly connect your slab with the girder, it will create a lot of longitudinal cracks.
Not mention here, but I know this is 100 mm. It can be changed. Like it ranges because of this eccentricity one, but the minimum generally we consider it 100 mm. Okay. So this is here 100 mm we have provided it. Now what I want to show you, this section. Where is this? Now plate have very what is the good thing? We are not going to change our plate for at support location or at mid location. What we do generally, we try to change our stiffener, not the plates. So if you have previously seen in concrete, web become thicker, and as we go in the mid and location, it become thinner. So, but in steel girder, generally we do not do. What we do, if you want, we can provide extra bottom slab at L/2, but we do not change normal arrangement. If it's required, we can able to. So now we will use this. If you look at it, both is same, but what is the difference here? The difference will be this one. From one end it is 300 and another end it is 1250. But this one will have 1250 and this side is also 1250. So from both ends. And where is this one? Yes. Now we need to see our top. Top plate is mentioned here 450. So overall deck width how much, sir? Yes. Deck width. Deck width overall. Overall deck width we are using this arrangement. Where is this? 10.500. Hello.
हेलो हेलो। हाँ रवि। अच्छा हो गया। चलो ब्रेक। क्लास चलेगी क्या? पता नहीं, सब ब्रेक लिए है, ये टाइम हो गया। टी टाइम। हेलो सर। Hello, you getting my voice? यस सर। Okay. I was trying to explain you this thing that we need to create this eccentric one. So here, Sir, no screen is visible. huh? सर वो स्क्रीन शेयर नहीं दिख रहा। Okay, screen ही नहीं दिख रही है, बताने को। मुझे बता दो देते स्क्रीन में देखो। What we have here, now this is fine, okay? This is normal gutter will be okay. But now I want to create eccentric one. Eccentric, first of all, you will have one side 1250, another side 1300. So total it will become 2550. So first of all, we need to paste this 2550. Now our reference point from this to this. So I have provided this for this Sir, 1.05. these things you have filled, sir. Huh? This B1, B2, B3, B4 you have entered ये already. Yes, ये sir. कब This बनने one थे? B1, B2 is the same, na? This one. This. Can This you is your. explain again, sir? Sure, sure. B1 सर is पिछले your top 10 side. मिनट से सर आपका स्क्रीन विजुअल नहीं था, म्यूट भी काम वो नहीं शायद कर इसी वजह से चला गया। मैं दोबारा दिखाता हूँ। देखो B1 क्या है? B1 है टॉप फ्लैंज के हाफ का डिस्टेंस। तो टॉप फ्लैंज है मेरा 400, तो B1 हो जाएगा 0.2, मतलब 200। और B2 भी यही हो जाएगा 300, बट B3 और B4 क्या होगा? इसका हाफ 0.425। और फिर है मेरी एक स्टिफनर, दिस वेब की थिकनेस, और दूसरा पॉइंट है मेरा H1, H2, H3। तो जब हम इसमें आएंगे H1, H2 एंड H, तो B1 if you look this half 0.2, then 0.2, then B3 half of bottom 0.425, 0.25. H is mid distance like web from this to this 2 meter. T1 thickness of top flange
50 mm, thickness of bottom flange 45 mm, thickness of web 25 mm. Now reference is required. Reference are from the top BC, from the top this plate, from bottom plate. So if you look at the reference, I have not changed SG. SG will remain same, but I am changing this top 1.05. तो रेफरेंस कहाँ से लेंगे? रेफरेंस एच से, इसके ये मैं इसलिए तो ड्राइंग खुली हुई है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करोगे इसके एच से, यहाँ से रेफरेंस लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो टॉप का स्लैब का रेफरेंस है वो तो 0 हो गया, लेकिन अब यहाँ से कितना रेफरेंस आएगा, ये तो ड्राइंग में कैसे पता चलेगा? है ड्राइंग से देख के बताइए ना। हाँ, ड्राइंग से तो बताया ना, ये वाला जो उसके लिए हमें ड्राइंग देखनी पड़ेगी, ये वाली ये देख रहे हो 1300, यस सर। और यहाँ पे 12.5 है, क्योंकि ये दोनों का बीच का डिस्टेंस 2.5 है, तो यही मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। 1250 प्लस नहीं, अभी 1300। वो सेक्शन से बता रहे थे ना। हाँ हाँ, यहाँ से देख लो, कोई इशू नहीं है। तुम अपन यही तो प्रैक्टिस होती है कि अपनी एक बार चीज देख के तो इतना मुझे मॉडल करना है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना पहले से गिवन है, 1.25, जो यहाँ से यहाँ तक ये 12.25 है, 1.25 1250 है। ये वो ड्राइंग में दिया हुआ है क्या? हाँ हाँ, ये सारे हमेशा 2.5 होते हैं। वहां से बताइए ना, वहां से क्लियर हो जाएगा। जैसे ये टोटल है ना 705, ये तो यहाँ से yes, हाँ, you can calculate even this, do not require. This is अच्छा, मैं समझ 1300. गया, Okay, just wait. ये 1300, 2150 से माइनस कर दिए उतना। 2.5 है। हाँ हाँ, तो माइनस कर लो, जैसे कर लो, ये हमेशा 2.5 ही रहता है। इसके बीच का डिस्टेंस 2.5 रहता है, उसका हाफ कितना हो जाएगा, 1.25। तो ये मेरा अब रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब स्लैब का कितना हो गया, 0। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, स्लैब जो SG लिखा हुआ है 0। ठीक है, अब मुझे चाहिए दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहां तक चाहिए, इसके यहां से यहां तक। ये कितना होगा, 1.25 माइनस हाफ ऑफ दिस इज 0.2। तो 1.25 माइनस 0.2 1.05, यही मैंने लिखा हुआ है 1.05। अब दूसरा पॉइंट क्या चाहिए मुझे, बॉटम का। बॉटम मींस जो मेरी यहाँ पे बॉटम प्लेट होगी वो थोड़ी सी बड़ी है। अब यहाँ से डिस्टेंस फिर माइनस करना पड़ेगा, 1.25 माइनस कितना विनाश, 0.425। So you will get around this thing. 8.825, not 825, it will be 1.25 minus 0.42. Okay, yes, 8.825। so ये मेरा बन जाएगा राइट हैंड गर्डर। मटेरियल पहले से वही है, कुछ चेंज नहीं करा है, बस अप्लाई। अब मुझे चाहिए लेफ्ट हैंड गर्डर। हाँ, ऑफसेट। हाँ, ऑफसेट कर लेंगे। हाँ, ऑफसेट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो मॉडलिंग के लिए काम आएगा। एक बार लेफ्ट हैंड गर्डर, लेफ्ट हैंड गर्डर में क्या होगा, अब ये चीज चेंज हो जाएगी। जो मैंने SG और ये दिया हुआ है ना, अब इसमें क्या चेंज आएगा, ये मेरा हल्का सा इधर मूव कर गया। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी, इस वाले गर्डर की। जो अब इसमें मैं रेफरेंस कहां से ले रहा इस पॉइंट से। तो 1300 माइनस कितना, 200, 1.1, 50 mm का डिफरेंस आ जाएगा। 1.1 लिख दो, जो है ये रहा 1.1। ये देखो हल्का सा मूव कर गया। अब इसमें कितना आ जाएगा, 875, ये आ गया 875। अगर आप एक बार कैलकुलेट भी कर लो कि कैसा आएगा, 1300 माइनस 0.425, so you will get 875 we have mentioned, and we will change the offset also, center top, सबके ऑफसेट चेंज कर देते हैं हम।
तो मिड गार्डर कब बना लिया? हाँ हाँ अभी कर देंगे मिड, बस सेंटर टॉप चेंज कर रहे हैं वो तो नहीं, वो सिर्फ मिड उसके गार्डर बाद। बनाए कब आप? अच्छा, उस समय मिड बनाए। गडर उसी का ही बन जाएगा, उसमें मुझे कुछ चेंज नहीं कराना। मतलब एक जो मिड गडर में है वो सिर्फ मिड की वैल्यू आ जाएगी, उसमें जो है मेरी ऑफसेट नहीं देना पड़ेगा। तो ये आ गए 3। अब इसमें क्या करना है, Mid girder, what is the difference, sir? सिर्फ यहाँ जाके मिड गटर में हमारा वो नहीं आ रहा ना, इसेंट्रिसिटी क्रिएट नहीं हो रही ना। यहाँ देखो ना मिड गटर जो है 2.5 इधर और 2.5 इधर, 2.5 इधर और 2.5 इधर, दिस इज मिड गटर। सो 2 मिड गटर है और एक लेफ्ट और राइट, 2 ये है। तो तो ये जो 2.5 लेंगे सर, वो जो 7.5 जो हाँ उससे। सेम हो जाएगा, हाँ हाँ। Sir, can you open and show once again mid हाँ विल girder, शो right and left? मिड गटर विल हैव द दैट काइंड ऑफ, आई हैव Section properties. model from this thing but we can also model it without the reference. Let me, I will show you. Wait, let me just assign it. Mid gutter also reference have been taken, but not eccentric one. It is calculated like this. If you have this drawing and this is my reference point, so from this to this point I need to calculate this point. So what will be there? 1.25 minus 0.2, and for bottom one 1.25 minus 0.8425. क्या ले रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। This is for mid one, but for this one this is different because this is 1300. Now slab, here slab is 2.5, but mid gutter, but here slab is 2.55. Main thing is about the top slab. Got it? No, mid girder, this distances are same, sir. I mean, only Ah. the difference is slab. In slab, Yes, what you are slab. changing, sir? Yes, What you are yes. changing? Can you show it? Or otherwise I can create with this thing also. We have I have if I go into section property and I will go in the add and you go to the composite, there is this steel I type A. This will be give me the mid one. If you do not want to use, this is for the eccentric one, but I have created all three with the eccentric, or you can create without eccentric also. No, in eccentric only. In mid girder, what is the difference for all three? Just can you explain us? Slab difference now. And in Okay. Can you open and show, sir? here, this mid two gutters will have a slab of 2.5. Okay, here it is also 2.5, but right one will have 2.55, left one will have 2.55, but here left eccentricity is higher, here right eccentricity is higher. Okay. No, in Sir. properties, can you open and show, sir? हाँ sure. सर 1 मिनट। हाँ समझ गया। अभी इसने आपने इधर से 1.30 2.15 है, तो यहाँ का डिस्टेंस तो अभी तो 1.30 है। तो ये कहाँ पे? जो मुझे बताओ, देखो मैं गटर के नंबर दे देता हूँ 1 2 3 4। अब बताओ कहाँ की बात कर रहे हो? ये गटर के स्पेसिंग 2.5 लिए आपने? हाँ 2.5 ही है, वो हमेशा 2.5 ही रहेगी। अच्छा ओके, लेकिन हम हाँ। मुझे यहाँ बोला 1.3 है जो लेफ्ट साइड में हाँ सर। ये कैंटिलीवर पोर्शन है, ये अच्छा। स्पेसिंग नहीं है, ये हवा में है। ये कैंटिलीवर पोर्शन है तो हाँ हवा में सिर्फ इतना ये हाँ है, तो स्पेसिंग तो ये होती है। एक मिनट सर, 2.5 में से हम 1.3 माइनस कर देंगे। 2.5 में से 1.3 क्यों माइनस करोगे? तो ना सर 1.25 अप्रोक्स आएगा। है मैं तो मैं समझ नहीं समझा नहीं, ये 1.25 कहाँ से लिया है? यार। 1.25 तुम्हारा ये हाफ डिस्टेंस हो गया ना, ये समझो। रुको, तुम्हें डिस्टेंस नहीं समझ में आया अभी, मैं बताता हूँ सर। इतना फास्ट पढ़ाते सर, मुझे कुछ बता नहीं रहा, तो मैं क्या करता? ये वहां से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है ये बताओ। ये 2.5 लिया आपने। हाँ और इसके हाफ का कितना हो जाएगा? 1.25। तो वही तो है वो। अच्छा ठीक है। हाँ यही तो पूछे थे ना, 1.25 कहाँ से आया? हाँ आ गया, इधर भी ऐसे ही आ जाएगा। बस अब जो, लेकिन हमारा मिडास में जो रेफरेंस लेता है वो ले रहा है लेफ्ट साइड से,
तो हमें सारे डिस्टेंस लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करने पड़े। ओके बस ये फर्क है, इसमें यहाँ से कैलकुलेट होगा, इसमें यहाँ से कैलकुलेट होगा। और यहाँ पे तुम चाहो तो कैलकुलेट करो, ना करो वो तुम्हारी मैं मर्जी। अगर मैंने लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करता हूँ तो शुरू का आपने जो रेफरेंस 0 लिया था, कहाँ ठीक पे? है सर। हाँ, वो स्लैब के लिए 0 है ना, ये तो रेफरेंस उसको एक्सिस होगी वो ना। सर कंपोजिट ओपन कीजिए ना। हाँ हाँ, देखो ये मेरा ये वाला गटर देखो, लेफ्ट गटर, कोई गड़बड़ खोल ये नहीं। तो 0 ही रहेगा ना मेरा एस जी ये यहाँ हाँ, top। आपने ये 0 लिया, ठीक है। हाँ सही है। फिर इसके बाद आपने 1.1 लिया, उसमें से 1.1 लिया, 1.1 कहाँ वो पे? सर ये ड्राइंग वाला। खोलिए। हाँ, कैलकुलेट करो 1.3 माइनस 0.2, हाफ ऑफ दिस। ये कितना डिस्टेंस है सर ये इसका, आपने जिस 0.2? हाँ ये दिया ना, ये वाली ड्राइंग जब हमने मॉडल करी थी मैंने दिखाया था ना अभी, ये रहा उतनी 400। 400। हाँ ओके, तो 0.2 माइनस कर देंगे उसमें से, तो हाँ 1.1 आ जाएगा। हाँ, ओके सर, फिर 0.875 वो कहाँ से? ये रहा ना तो 0.8 0.85 है, तो इसमें हाँ, से 1.3 में से माइनस करो 0.425। अच्छा ठीक है, समझ गया ये। समझ गए ना? हम्म, आगे आधी है समझ में? अभी समझ में आ गई। नहीं आधी आधी। दीवान, हेलो दीवान है Hello. तुम्हारा? हाँ दीवान आया ये समझ? दीवान नहीं, अच्छा विघ्नेश बोल रहे हैं। Now this is left hand girder. In right hand girder, you open, sir. हाँ, right hand will be from the 1.2. Right hand will have changed this 1.05 825. Why it is This is changed? for why? Because everything we are considering from the left. हाँ yes, everything should be our reference axis always from the left. So left is 1.25. So it is considered 1.25. Yes, but here the thing changes BC, this top slab. If you look at here in BC, this In is mid 0.5. girder, that reference will be same only. Only that the हाँ, top slab width will be changing. yes yes, Okay. okay, so this will look like again same. Okay 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 okay, this will come, the left will come at here. Right. What is the mean? Something over that. Okay, because of this mid girder is not. Why there is overlapping? Now it's more. Very little. This is fine. So this is will be your normal only steel girder with slab. Yeah, model. Now afterward, first we try to create the bearing also, because maybe we will create tomorrow. So today is already सर late. हाँ yes मेहर। इसमें सर वो इसमें भी ऐसा होता होगा ना कि फर्स्ट हमारा गर्डर इरेक्शन हो रहा है, फिर डेक स्लैब कास्टिंग हो रहा हाँ है। कंस्ट्रक्शन स्टेजेस ना, कंस्ट्रक्शन हाँ, स्टेजेस। हाँ वो करेंगे ना, कंस्ट्रक्शन स्टेजेस होंगे इसमें। इसमें सेक्शन, हमारा अच्छा उसमें आएगा। डिफरेंशियल श्रिंकेज लॉस आएंगे, हम्म, फिर वो कंक्रीट की वजह से लॉसेस आएंगे, वो करेंगे कंस्ट्रक्शन स्टेजेस होगा। पूरा वैसा ही करेंगे जैसे एक्चुअल में होता है। हाँ ठीक। ऐसे नहीं करेंगे कि अपना कि मान लेंगे कंपोजिट बन गया और जैसे मैनुअली करते हैं वैसा नहीं करेंगे। डायरेक्टली। हाँ, तो हम इसलिए थोड़ा, इसलिए और अच्छा है कि ये चीजें समझ में आती हैं जब हम अभी यस हम यस। स्लैब को गायब भी करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन स्टेजेस आएंगे। बट आई गेस सर ये जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं पता चलेगा एग्जैक्टली। हाँ, ये यूजर प्रैक्टिस। इंटरफेस थोड़ा समझना पड़ेगा सर। That's required. हम्म, ओके, अब इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। अभी तो जब बेसिक मैंने तुम्हें स्टील गटर की मॉडलिंग सिखाई है विद स्लैब, वरना स्टील गटर विदाउट स्लैब तो कोई भी कैसे भी जाके मॉडल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये विद स्लैब है, लेकिन हम इसमें कंस्ट्रक्शन स्टेजेस लाएंगे कि पहले स्टील कास्ट होगा, फिर उस पर ग्रीन कंक्रीट आएगा, फिर वो हार्ड होगा, फिर हमारा
ये आएगा, कंपोजिट बनेगा, फिर कंपोजिट के लिए चेक करेंगे, वो सब चीजें आएंगी, शेयर स्टड भी देंगे, सब Yes, चीज yes. देंगे। ओके Yes, yes. okay, so closing, thank you. So tomorrow I think it will be same, I will inform, maybe same time will be. Okay. Okay. Good night.